Good morning, class 7th. In today's lecture, we will discuss about the transfer of heat. But firstly, can you tell me what do you mean by transfer? That means movement. That means this heat can travel from one place to another. That is called transfer of heat. And what are the modes of transfer of heat? There are three main modes of transfer of heat, that is conduction, convection and radiation. And in the ongoing videos we will study about these modes of transfer of heat. But before starting further, I want to ask you some questions. Just think about these questions. A frying pan becomes hot when it is kept on flame. Is it so? When a pan is removed from the fire, it cools down. Just think about these questions. And how does heat flows? Heat कैसे flow होती है? So by discussing these three topics, we are able to give the answer of these very easy questions. So let's begin about first mode of transfer of heat, that is called conduction. Okay. So what is called conduction? Conduction, it is a process by which the heat is transferred from hotter end to the colder end. In the previous videos, I told you that heat is always transferred from hotter end, that means high temperature, to low temperature. But in the mode of conduction, heat is transferred from hotter end to the colder end without the movement of particles. So we will discuss about this, what does it mean and what are the conditions for this conduction method, that the two objects must be touching with each other and there should be some difference in the temperature. That means one object should be at high temperature and other should be at low temperature. Then the heat is going to transfer. Is it okay? And this mode of transfer of heat requires medium. That means, like in the case of solids, this mode of transfer of heat occurs. Generally, heat is transferred by the conduction. In the case of solids में होता है ये. Like in the case of solid, the particles are closely packed. You can see here in the lower classes पढ़ा होगा आपने कि solid के अंदर जो particles हैं वो कैसे पैक होते हैं, बहुत ही टाइटली पैक होते हैं. और जब इनके अंदर हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, एक्चुअल में हीट कैसे ट्रांसफ़र होता है, इन द बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन मीन्स विदाउट द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स. पार्टिकल एक जगह से मूव नहीं करते हैं, वो अपनी जगह पे क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं. Like see here, vibration means they are just handling over the vibrations or the heat is transferred. That means heat is passed from one particle to another. Like अगर हमें क्लास में बेंच पे बैठे हैं और हमें एक बेंच से बैठ के दूसरे लास्ट स्टूडेंट को अपनी बुक पास करनी है, तो कैसे पास करते हैं हम? वी आर गिविंग द बुक टू पास करते हैं ना, गेम भी खेलते हैं पासिंग गेम, तो उसमें क्या करते हैं, उसी तरह से कंडक्शन में भी, कंडक्शन मेथड में भी हीट क्या होती है, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है. बट देयर इज़ नो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल. पार्टिकल मूव नहीं करता है अपनी जगह से, वो अपनी जगह पे ही क्या करता है, वाइब्रेट करता है. एंड दिस मोड ऑफ कंडक्शन इज, दिस मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट इज़ कॉल्ड कंडक्शन. ओके. एंड जो भी सब्सटेंसेस इस प्रोसेस को शो करते हैं, जो मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं, उन मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं, कंडक्टर्स. लाइक कंडक्टर्स आर द मटेरियल विच अलाउ द हीट टू पास थ्रू देम एंड दे आर कॉल्ड द कंडक्टर्स. और जिन मटेरियल में से ये हीट पास नहीं होती है, दे आर कॉल्ड इंसुलेटर. यू कैन रीड इट फ्रॉम हेयर ऑल्सो. ओके. which can allow the heat, they are called conductors. For example, aluminium, iron and copper. पर जिनमें से heat pass हो जाती है, they are called, they are which are not going to pass the heat, they are called insulators. Okay. So like the plastic, अगर हमें कोई hot pan को उठाना है तो हम कैसे hold करते हैं उसको, हैंडल से उठाते हैं ना, that are made up of plastic. लेकिन अगर जो उसका स्टील है, that is जब उसको बर्नर पे रखते हैं तो वो हॉट हो जाता है, दैट मीन्स वो गुड कंडक्टर है. लेकिन जो प्लास्टिक है या वुडन हैंडल्स है वो क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं. ओके. एंड वाटर एंड एयर ऑल्सो द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. ओके. एंड with this lecture I will also share one video or the activity from your book. That activity is the 4.7. just go through
that activity and the topics will be more clear to you. Okay, this mode of conduction will be clear to you.